Hello friends, welcome to this video. Today we are going to solve the question number 3 of exercise 4.4. So the question is it possible to design a rectangular mango group whose length is twice its breadth and area is 800 meters square? If so, if possible, then find its length and breadth. Okay, तो एक रेक्टेंगुलर ग्रुप बनाएगा, ठीक है। वो ग्रुप में कंडीशन दिया है कि उसका लेंथ ब्रेथ से 2 गुना होगा. लेंथ विल बी डबल ऑफ द ब्रेथ, ओके, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर. ओके, तो वो रेक्टेंगुलर ग्रुप बना पाएगा कि नहीं पाएगा, ठीक है, वो क्वेश्चन हमको पूछा है, ठीक है. So you know this is a rectangle, okay. You have learned about rectangle in geometry classes, okay. So we'll not go to that today. We'll try to solve this question. This is the rectangle, okay. So this is the shorter length, this is the shorter length, and this is the longer length, okay. So this shorter length is called breadth and longer length is length, okay. So what is the condition here? The length is twice its breadth, okay. अगर ये breadth लेंथ ब्रेथ से 2 गुना बड़ा है, ओके. अगर ये ब्रेथ 2 होगा, 2 मीटर होगा, सो 2 सेंटीमीटर होगा, तो ये 4 होगा. अगर ये 3 होगा तो लेंथ से होगा. अगर ये से है तो ये भी से है. अगर ब्रेथ अगर 5 है तो लेंथ उसका 10 होगा. दिस इज द कंडीशन हियर, ओके. And the area is given as 800 square meter. So breadth length is twice the breadth. Breadth अगर 2 होगा तो length 4 होगा. तो in that case what we can say, breadth अगर x होगा तो length क्या होगा? Twice x, 2 गुना, ओके. बिकॉज breadth हमको मालूम नहीं है क्या है. अगर बोल रहा हूँ, अगर if the breadth is 10, then length will be double. That is, length will be 20. So we don't know the breadth. So we will consider the breadth is x. Then automatically length will be twice x. Okay. So we'll try to solve this. Let breadth is x. So here area is given as 800 meters square. So obviously breadth will be in meter, okay. So length is also will be in meter. So breadth, I think x meter, we can say x meter. Then automatically length क्या होगा? Length is twice its breadth, okay. Length is twice its breadth, okay. तो breadth जितना होगा उससे डबल होगा लेंथ. तो ब्रेथ हमने ब्रेथ x, तो लेंथ ऑटोमेटिकली विल बी ट्वाइस x मीटर लिख सकते हैं. एमटीआर एमईटीएफ विल भी लिख सकते हैं, ठीक है. सिंपल एम भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं. याद रखना m इज मीटर, ट्वाइस x. ब्रेथ इज x मीटर, लेंथ इज automatically will be twice x because this is given. Length is twice its breadth. And another thing is given. What is that? And area is 800 meter square. 800 meter square. So we know what is the area of rectangle. The area of rectangle is, we know area of rectangle is LB, length into breadth, okay. Length into breadth is called area of that rectangle. So L into B is equal to 800, okay. So area is L into B, okay. Right, another way. What we know? Area is, so
L is length, B is breadth. Okay. So in that case, here area is given 800. L is here twice x into B is x. Okay. This. So we can write here, so this into this, twice x into x. So what it will be the value? 2. Here is 2, here is 1, 2 in 1 is 2, and x into x square. Okay, so we have found x square. So ultimately this is a quadratic equation. So in that case, what we can write, we can simply write twice x square is equal to 800. Okay, it is 2, here it is 800. 800 is divisible by 2. Okay, so we can divide, we can further simplify this. So if we divide this by 2, then that will be what will be the value? You can write one more line, twice x square by 2. Then if we divide this by 2, then you need to divide this by 2 also. Okay, 800 divided by 2. So this will be cancelled out. So this will remain x square and this will be 400. Okay, 800 by 2 is 400. Okay, so now we can write x square. 400 we can bring to the left of the equation. So there it will be 0. So this is a quadratic equation. Okay, so quadratic equation. So this is not in the standard format because here it is we have x square but we don't have x. Standard quadratic equation format is ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay, so this is not in that format. You can write one more line, x square plus x is not there, so 0 we can put 0 into x plus this is we can write. Okay, now this is in this format. Okay, so here we can show we have found the quadratic equation in the standard format. So here, okay, what is a? The term associated with x square is a. So here x square के साथ क्या है? 1 है. Okay, so 1. Okay, so here b is what we can write 0. Then c is the term without x, that is c. The term without x is minus 400. Okay, c is equal to minus 400. Okay, so what we can write now, we need to find b square minus 4ac. So b square minus 4ac is equal to what it will be? B square, b is 0, 0 square minus 4, a is 1, c is minus 400. Okay, c is minus 400. Okay, so b is 0, 0 square minus 4 into a is 1, then c is minus 400. So if we further simplify, 0 square is 0, then we need to multiply all these three terms. This is minus, this is minus, minus, minus will be plus. 4 4 is 1600. So this 0 plus 1600 is equal to 1600. So this is a greater than 0. So we can write b square minus 4ac is greater than 0. In our earlier video, we have found that if b square minus 4ac is greater than 0, then quadratic equation will have real roots. So the equation has two distinct real roots. मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो
रियल रूट रहेगा डिस्टिंक्ट अलग अलग। जो रियल रूट रहेगा मतलब x का वैल्यू रियल होगा। तो रियल वैल्यू रहेगा मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू रियल रहेगा। तो विद दिस कंडीशन the length is twice this breadth and area is 800 meter square. With this condition we can design a rectangular group. Okay, so ultimately x का वैल्यू अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज अगर लेस देन जीरो होता, अगर नेगेटिव मिलता तो हम लोग का रियल वैल्यू नहीं मिलेगा, x का वैल्यू नहीं मिलेगा, x का वैल्यू रियल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो तब हम ये रेक्टेंगल नहीं बना सकते थे। अगर x का वैल्यू रियल मिलता है, कोई भी डेसिमल भी मिल सकता है, 3.5 भी मिल सकता है, 4.5 भी मिल सकता है, 5, 6, 7, 8, -5 नहीं होगा क्योंकि -5 होने से वो जीरो से लेस हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली रियल वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन में जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, दिस कंडीशन में हम लोग ये रेक्टेंगुलर ग्रुप डिजाइन कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली नेचर ऑफ रूट से निकलना पड़ा, इसीलिए ये दिस क्वेश्चन कवर दिस एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज कवर दिस क्वेश्चन। ओके, सो अल्टीमेटली क्या लिख सकते हैं, हेंस the rectangular mango group can be designed with this condition. What is the condition? रेक्टेंगल का एरिया 800 मीटर स्क्वायर होना पड़ेगा एंड लेंथ उसका ब्रेथ से डबल होना पड़ेगा। ये दोनों कंडीशन से हम लोग एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। अगर रेक्टेंगल बना सकते हैं वो हमको मिल गया है क्योंकि एक्स का वैल्यू हमको रियल वैल्यू मिलेगा, तो डिस्टिंक्ट अलग अलग वैल्यू मिलेगा रियल वैल्यू, एंड देन वी कैन मेक ए रेक्टेंगल। ओके, तो वो मिल गया है। अभी हमको वो रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ का वैल्यू निकलने के लिए बोल रहे हैं। लेंथ ब्रेथ हम लोग ब्रेथ क्या पकड़ा था, एक्स पकड़ा था, तो एक्स का वैल्यू निकलना है। तो एक्स का वैल्यू हम लोग निकलने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं अभी। सो इन दिस केस बी का वैल्यू 0 है, -b -0 प्लस माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमको क्या मिला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमको क्या मिला है, 1600। ओके, 1600 हमको मिला है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। तो ऑब्वियसली वी कैन राइट हियर 1600। ओके, 1600 रूट ओवर के नीचे में देखो, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकला है। बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ है, दिस रूट ओवर साइन के नीचे में है, साइन के रूट ओवर के अंदर में है। तो वो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है 1600, दैट विल आल्सो विल बी अंडर द स्क्वायर रूट। ओके, नीचे में क्या रहेगा, 2, ए का वैल्यू 1। ओके, तो व्हाट यू कैन राइट हियर, 2 1 जा 2, then -0 प्लस माइनस रूट ओवर 1600 मतलब क्या है, रूट ओवर 1600 मतलब 1600 का स्क्वायर रूट। 1600 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 40 होगा। जो 40 दो बार मल्टीप्लाई करो तो 1600 मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए देखो ये 40 इंटू 40 1600 इक्वल टू 40 इंटू 40, 40 इंटू 40 मतलब 40 स्क्वायर। ठीक है, सो 1600 द स्क्वायर फॉर्म ऑफ 1600 इज 40 स्क्वायर। तो स्क्वायर फॉर्म का रूट क्या है, 40, तो 1600 का स्क्वायर रूट इज 40। ओके, so this is you already know these things. Okay, so now what you can write, again plus minus, this will be 20. Okay, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू है +20 और -20। अभी x यहाँ पे क्या है, x इज ब्रेथ। ओके, तो x इज ब्रेथ ऑब्वियसली। तो अल्टीमेटली हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इसका दो रूट रहेगा, ये एक +20 एक -20। बट इन दिस केस x इज व्हाट, in this case x is what we have considered x, what we have assumed as x is the breadth,
तो ब्रेथ तो -20 नहीं हो सकता है, तो ब्रेथ तो -20 नहीं होगा। -20 मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा तो एक लेंथ नहीं हो सकता है। दिस इज अ लेंथ मेजरमेंट। सो एक रेक्टेंगल का ब्रेथ है, तो ब्रेथ का मेजरमेंट 0 से छोटा नहीं हो सकता है। सो ऑब्वियसली -20 हम लोग नहीं लिखेंगे, तो मतलब होगा ही नहीं ब्रेथ, तो ब्रेथ विल बी 20, पॉजिटिव वैल्यू होगा। 20 क्या था, x मीटर था, so this will be 20 meter, and length will be 2 x था ना, 2x, तो ultimately 40 meter। obviously अगर breadth 20 है, length 40 है, तो उसका obviously area 20/40 is equal to 800 मीटर स्क्वायर होगा, जो क्वेश्चन पे दिया हुआ है। ठीक है, so that's all for today. I think you have understood, and if you have any doubt, then you can ask me. I will explain you further if you ask me. Okay, if you have understood, please do like, okay, and share it to your friends, dear ones, so that they can also get benefited from this video. Okay, then bye. Thank you.